कभी ना कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशियों की बारिश। अब सिफारिश नहीं होती मेरी ऐसी ही खारिज। बिना कोई चिक चिक किट 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 मिल जाए मुझे मेरे सारे गिफ्ट्स और पूरी हो जाए झट से मेरी ये विश लिस्ट। मेरी ये विश। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न। अभी लेके अपनी लिस्ट उन्हें करूंगा मैं तंग, सभी का तो हो रहा है मेरा भी लगे टर्न। मम्मी पापा को बुलाना है जल्दी से मेरे साथ माउंट मेरी के आसपास एक छोटा सा पेंट हाउस, ताकि नाश्ते से पहले ही वो कर ले पूजा पाठ। मुझे अभी जाके बापूजी ने कहा है शाबाश, सारे कागज उनके नाम हर चीज का ले हिसाब। रोज सुबह उनके पास में करूँ अपने हाथ साफ, दिया है पर पहनते ही नहीं सोने की वॉच। लगा लगा के मैं डांट हेल्थ की करवाता हूँ जांच, मुझे अवार्ड लेते देख खुशी से भर जाए उनकी आंख। मेरे नाम से ही है बुड्ढा बुड्ढी की पहचान, उन्हें सारी सारी बलाओं से करूँ मैं प्रोटेक्ट। अब नो इंश्योरेंस कॉज अब है डिनो अनलिमिटेड। हम लकी मुझे जीने का मिला है एक मकसद, मम्मी खुश है पापा कम होते अब अपसेट। हंसी खुशी से भरा है घर मेरा लथपथ, फाइनली मैसेज पहुंचा रब तक। कभी ना कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशियों की बारिश। अब सिफारिश नहीं होती मेरी ऐसी ही खारिज। बिना कोई चिक चिक किट 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 मिल जाए मुझे मेरे सारे गिफ्ट्स और पूरी हो जाए झट से मेरी ये विश लिस्ट। मेरी ये विश। कुछ दोस्तों के धंधे मुझे करवाने हैं सेट, बड़ा करना है टैट का जिम्मी एंटरप्राइजेस। अब नो वेटिंग लिस्ट का झंझट और न तत्काल टिकट, फ्लाइट में भाव करके खाती है माँ अभी बिस्किट्स। न ज्यादा बड़े सपने न ज्यादा बड़े शौक, बस छोटी छोटी ख्वाहिशें और छोटे छोटे ख्वाब। मम्मी की शक्ल मुझे करनी है रिकॉर्ड, जब गिरते पड़ते वापस से आएगा हैंकॉक। मुट्ठी में दबा के रखा है मैंने पलक को, आसमां में जाते देखा टूटते बल्ब को। मांगू कैसे अच्छा नहीं है मेरा तलफ्फुज़, जान तुम जानते गरज को। हाथों में कुछ नहीं है फिर भी माने ना दिल ये जिद्दी, तेरी बनावट हूँ मैं क्या करूँ। रोज लड़ता हूँ कैसे यू शुड सी, फीलिंग है ये गुड गुड सी। जानू तू देखे है सारे आंसू। आई जस्ट होप कि हम सब की विशेष पूरी हो जाए यार। कभी ना कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशियों की बारिश। अब सिफारिश नहीं होती मेरी ऐसी ही खारिज। बिना कोई चिक चिक किट 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 मिल जाए मुझे मेरे सारे गिफ्ट्स और पूरी हो जाए झट से मेरी ये विश लिस्ट। मेरी ये विश। So hello everyone, welcome back to the new stream. कोई है तो नहीं फिर भी कोई है तो नहीं फिर भी वेलकम बैक टू द न्यू स्ट्रीम। चैट खाली पड़ी है भाई। वेलकम टू लाइव चैट, रिमेम्बर टू गार्ड योर प्राइवेसी। कोई नहीं है चैट में। तो आज हमने लिया है एक चैलेंज जो कि कल भी लिया था, बट मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं करा। सिस्टम रिकॉर्ड किया था, थोड़ा सा लाइव हो गया था। अभी वी केम अगेन, new day, new problems. So today I have took three questions, three lead code questions, DSA questions. इससे पहले मैंने नहीं कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर ब्लू टिक आता है if I have done those questions. I took these questions from ChatGPT. Daily temperature, rotting oranges, product of array except self. So let's go. Let's solve these questions in 1 hour. I don't think so कि होगा. Let me start a stopwatch.
So first question here we have 238. Product of array except self. What it means? Given an integer array nums, return an array answer such that answer of I is equal to the product of all the elements of nums except nums of I. What it means? The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in 32-bit integers. You must write an algorithm that runs in ये तो हमसे नहीं होगा without using the division operation. They have given a, let me take you to the Excalibur and see what is the answer and what they are telling to do. This is the data from yesterday. This is the array and this is the output. Let me take both Control C and Control V. Here we have a array and input. Next, what we will do. Given an integer array nums, okay, we have a, तो क्वेश्चन कहता है कि if we are standing over here at, let me take I over here. If you are standing at I, the answer of 0 will need to come like product of remaining elements. What it means? 2 multiplied by 3 multiplied by 4. Right now we can just traverse with the array and solve it. Next, what we can do, we can use the 2 for loop, then I over here and j to calculate the product. 2 multiplied by 3 multiplied by 4. We will find out that for 2, for 2, tuck tuck and tuck. We will do it like a circular array. Then when 3 is over here, we will start from here and go here, here, and when it comes to here, when it comes here, we will break it out. Hmm. This is what I think. So let me write first, and then we will try to improve what they are telling like people of here. First, let me get the output for int 0 I less than nums dot size I plus plus, then for int j equal to 0, j less than, how we can do it like a circular, कैसे कर सकते हैं, nums dot size, हाँ
So here we are back again. Let me write this code. Mm, 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 mm. Let me take, how can I solve this? First, let me take the array to store vector int answer, vector int answer. Mm, I I need to think a bit and थोड़ा focus नहीं आ रहा है. Let me write it again. Need this like 2 multiplied by 3 multiplied by 4. People here are crazy. Let me wait and make myself comfortable with this stream. Somehow no one is here, but still I can't focus. I can do one thing. If nums of if j is equal to I, continue, continue. Otherwise, otherwise, int data equal to 1. Data equal to data multiplied by nums of j. If we get all the data, then we can add that into this answer of I equal to data. Let me see if people are watching. Where should I see? I will go over here. Search myself. Receive visible message. Right here. वीडियो प्ले मत होना भाई. Live stream. One people. Who is the one? Let's head to the problem again. And once we cover all the array, return answer array. Let me run this and see. Oh, a very big error. Reference building to null pointer integer.
Return error reference binding to null pointer of type integer. Nums of j, nums of j, nums of j. Array. Oh, sorry guys. There was a lot of delay. मैंने लास्ट टाइम एक महीने पहले सॉल्व किया था क्वेश्चंस और कल किया था एंड राइट नाउ आज सेकेंड डे है तो माफ कर दिया माफ कर दो आई वांट टू से nums dot push back data multiplied by no data only data. We got the answer, but we are using two for loops. Let me explain what uh, they are dealing like big of n, but we are using big of n square. How? Let me explain. This is the first for loop which takes big O of n. Then again we have a second for loop inside that which takes big O of n, big O of n time complexity because of what is the n? What is the meaning of n? Size of the array, size of the vector, size of the this size of this array, which is 5. It means what it's taking big of 5 plus multiplied by big of 5 is equal to total time complexity equal to big O of n square and space complexity we are using a vector array to store the answer. So what it means we are taking big O of n space complexity to store but not to solve the answer, just to return the answer. We are not using it like in logic or somewhere. We are just using that space to return the answer, which we had to. Next, let's see how we can increase, not increase, to decrease our time complexity. How we can remove this second second for loop. If you guys have an idea how we can remove, drop in comment. I am like मर रहे हैं हम एक कमेंट देखने के लिए मैं ही कर दूं क्या no that's not fair let me see what I'm telling over here how we can remove drop in comment I am like मर रहे हैं हम एक कमेंट देखने के लिए मैं ही कर दूं क्या no that's not fair let me see what I'm telling over there is a lot of background noise coming from our cats no worries let me focus on the problem. So we have solved one, but we had to improve time complexity. How we can improve it? Let's go over here and let's copy this answer because when you see worst answer, then you can find out the best answer. Also, with this answer, you guys can't hire me. You guys are here. Sorry.
So with this answer, you guys can't hire me. So I had to improve my time complexity. Tick, 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 tick. I'm going through I, J, J, J. When I'm standing over here, I want multiplication of multiplication until over here. Then I can remove this one. If I stand over here, I need multiplication of this. Then what I will do, I will stand over here, and then answer equal to 1. And when I go forward, 2. And when I go forward, answer will become 6. And when I go over here, answer will become 24. No, 2, 6. A lot of confusion over here. 23 minutes, and still I'm over here. What they are telling me, without using division operator, we still don't know how to divide, how to use that division operator. A very big question. What can I store? What should I store? To total answer is 24. If I divide it with a 1, we will get 24. If I divide it with a 2, we will get 12. If I divide it with a 3, I will get 24. If I divide it with a 4, I will get a 6. Yes, let me write code with what they are telling to not use. They are telling to don't use. They are telling like don't use division operator, but we got a logic with a division operator, so we will write that. Let me accumulate first. Int total accumulate, not accumulate. Accumulate gives multiplication, addition. So I had to use a for loop for int I equal to 0, I less than nums dot size, I plus plus, increment the array, and increment the value of I.
Then let me take a variable int total is equal to 1. Why I'm taking 1? If I take a 0 and multiply with something, the answer will become 0. I have a mind. So let me take out the total multiplication value from this array. Hmm, mhm. Total equal to total multiplied by equal to nums of I. Then what I will do, I will use for loop. I know one more for loop to traverse again nums dot size I plus plus. Then I will simply divide by total. Let me divide it and data equal to total divided by nums of I. If I do like this, I will get answer. Let me take the seal of this answer and push that into our answer array. Dot push back data. Seal is giving division by 0. Oh, we are dividing it by 0. If we divide it by 0, our answer will be 0. So if nums of I is equal to 0, then we will not divide. We will just push 0 into the answer array. I don't know whether it is correct or not, but we will push. Then return, not return, continue. And when it is not, we will do this normal method. I got one correct answer and one incorrect answer. For positive, it is correct. For negative, it's giving an error when I'm dividing it by we are accepting 0. 3 multiplied by 3, 9. Oh, we don't have to give 0, we directly have to give a total. Still I'm getting an error. If answer of I is 0, then push total. What is the total? Oh, here total is coming 0. In our array, we have a 0 element like data. So when we multiply with a 0, it will become 0. So what we have to do is that if there is a 0, we again have to traverse, we again have to find that. Let me think. Okay, let's find that. Let me find. Let me find. If I accept 0,
I had to traverse. Accept that value. Accept that high. I don't write good code. I written a very bad code over here. Okay, what I'm using as initialization and what I'm using next. Still I didn't. Oh, here I'm storing and total as a. Let me take a total one in total one and this also. Still I'm pushing. We have passed two test cases, but just look at my code. This is only one traversal, but still I am confused. Let me let me take you through the time complexity we have improved. Here is a one for loop which is taking big of n to calculate the multiplication and total multiplication of the elements of array. Second for loop we are traversing to add our answer in answer vector. Then if we get 0 as a element, then we are just traversing, we are making doing क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं उसका काम अलग से कंडीशन में. So we are taking a condition for it and calculating the answer for it separately. And this is the normal division which they have tell us we don't use, but still we are using. And we got the answer. If we submit it, it will get submitted, but I need to clear this code. So what I had to do, they are directly telling that without using the division operation. So again, let me think a bit. I don't have any.
Good approach. But our numbers of I will be in between minus 30 and 30. So, ah, this is what they are telling. इसका तो हो गया है. The input is generated such that is guaranteed in between. Let me take a help. Google fix. Oh, let me. Can I do it? Suresh Thamke is here. कैसे सॉल्व करूं भाई? Let me take the second next question. Then we will come to this. Uh, Let me look at the solutions. Looking the input array twice. Mimicking three solutions. Let me see this. आ जाओ भाई आ जाओ. Let me open the Discord. अभी WhatsApp ओपन करना पड़ेगा क्या? आ जाओ. क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं. जल्दी से आ जाओ. जल्दी से आ जाओ. Let me open the new tab. Take it here. Discord. Okay, okay. I'm sending link भेज रहे हैं. Let me log in Discord first. कोई एरर ना आ जाए लॉगिन का. Where is a Discord? I have Discord over here.
बाप रे. So अभी तक माइक बंद था. Sorry for that. Let me see this. Let me see this and see the answer which is solved using. भाई ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? इतना गैप इधर ही सही था. Hmm. He is taking. This is the casual, like getting the size of the array. Next, we are initializing an vector with the size n. Next, left product, right product. In left product of 0, we are showing 1. Then to traverse. नहीं होगा भाई. Let me see this one. Space optimization. Output of n. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए तारे. So let me accept that कि मुझे DP उतना नहीं आता है. So let's head to next question. Daily temperatures. Given an array of integers, temperature represents the daily temperature. Return an array answer such that answer of I is the number of days you have to wait after the ith day to get a warmer temperature. If there is no future day for which this is a possible, keep answer of I equal to 0 instead of answer. Let me remove everything from let me keep it and paste it over here. This is the temperature array. We have given a temperature 73, 74, 75, 71, 69, 72, like that. And this is the output we had to get. Then let me write the indexing of, let me do the indexing for them. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuck, tuck. And here is the indexing for them.
Next, we have to find like temperature is given. Return an array answer so that answer of I is the number of days you have to wait after ith day to get a warmer temperature. Like if you are standing over here, the temperature is 73. Then next day, 74. It means we will get a more warmer day. Then we have to wait only one day to get that. Next, when we are standing at 74th, like one day, what I am telling, I am complaining or what? हेलो Hello, hello. आवाज आ रही है क्या भाई? हाँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर इधर सपोर्ट भी को बुलाओ क्या? लगाओ लगाओ फोन लगाओ डीएसए सॉल्व करने लगे लेट हिम सॉल्व डीपी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा भाई डीपी भी मुझसे मत करवाओ भाई, नहीं होता। इधर स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया नाइस। है fail to start the camera let me camera screen अरे 1 मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ let me share the screen so when we are standing at first day we have to wait again one day and when we are standing at second day the temperature is 74 so to get more warmer we have to come at sixth day so the answer will be like one two three four fourth day हेलो hello हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा नासिर भाई तुम्हारा। hello 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 हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। okay तो चलो इधर बोला थोड़ी देर में आऊंगा। हाँ चलता लिंक शेयर करूँ क्या हाँ, करके रखो शेयर। तो चलो सेकंड क्वेश्चन इजी वाला ही है, हार्ड वाला ही है? मीडियम लेवल ओके। 739। मैं भी लीड कोड ओपन करता इधर। okay
So we can use a first for loop, then inside that second while loop to get the temperature. I think so. Let me understand first, bhai. Okay. 51 minute. सी प्लस प्लस यूज करके करते हो तुम सॉल्व? हाँ, तुम्हारा पाइथन। हाँ भाई, मैं पाइथन वाला हूँ। सी प्लस प्लस यूज करके करते हो तुम सॉल्व? हाँ, तुम्हारा पाइथन। यस, वॉइस इज कमिंग। तो चलो लॉजिक बोलो, जल्दी जल्दी। भाई लॉजिक, क्या लॉजिक बोलूँ? मेरा लॉजिक निकल रहा है। बहुत दिनों के बाद हाथ लगा लीड कोड को। मैं भी 1 महीना हुआ। 1 महीना बाप रे। मेरा भी ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया अभी। फिर अभी डीए से मास्टर को बुलाना पड़ता, समर्थ कोड़ी। डीएसए मास्टर आएगा आएगा आएगा, अभी अभी एंट्री मारेगा देखो। अभी उन्होंने तो और अलग लैंग्वेज, जावा। वो भाई असेंबली में करेगा वो। जावा भी नहीं। वी डोंट, असेंबली लैंग्वेज नहीं है। वी डोंट हैव असेंबली लैंग्वेज हियर। स्विफ्ट, रैकेट, ईयरलैंग, elixir, scala, dart, php, typescript, Some people do it using JavaScript भाई, but I think जावास्क्रिप्ट। that's hard. सबसे हार्ड। मेरे लीनियर सर्च भी नहीं हुआ मेरे हाथ से जावास्क्रिप्ट में। मैं यूज कर रहा था कांस्टेंट फॉर लूप के अंदर। फॉर कांस्टेंट आई इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से C++ और Java is best for the हम्म। DSA. अभी इधर इधर भी टॉप पर है ये देखो। प्लस प्लस जावा, उसके बाद पाइथन, देन जावास्क्रिप्ट, देन टाइपस्क्रिप्ट। हम्म। लॉजिक लॉजिक। भाई कुछ सजेशन चाहिए था यार, अपना वो शायद वेबसाइट देखा है तूने, मैंने और समझ ने जो किया है। हाँ हाँ हाँ। इस पे कुछ अलग डाल सकते हैं क्या, क्या कुछ फीचर नाम बोलो हॉरिवर, आइडिया? कौन सा क्या था वेबसाइट का नाम? अरे वो न्यूज़लेटर का था देखो, द द क्लाउड कोड डॉट फन। द क्लाउड कोड, यूट्यूब चैनल आ रहा है क्लाउड क्लाउड कोड डॉट डॉट फन। डॉट फन।
नहीं भाई, यूआरएल नहीं मिल रही, रुको यूट्यूब पर जाना। क्लाउड, आई गॉट दैट, क्लाउड कोड डॉट फन। हाँ, आर्टिकल जीमेल पर डेली आ वेबसाइट रहे, आता है ये तो। आर्टिकल डेली आ रहे जीमेल पर मेरे। अबाउट हाँ, आर्टिकल। वो डेली आते हैं। थोड़ा सर्वर इसका स्लो है, कम पैसे लगे इसलिए। डेली एंड कंसाइज, यूआई और बेटर हो सकता। यूआई तो अच्छा है। नहीं, और भी हो सकता बेटर। और बेटर मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए वो भी सजेशन बता यार, सच में बहुत कुछ इम्प्रूव करना है इसमें। डार्क मोड एक फर्स्ट। हाँ, वो तो हर प्रोग्रामर के लिए होगा भाई। सबसे फर्स्ट डार्क मोड। उसके बाद इधर डार्क क्या तो मोड एरर आ तो रहा। लिख लेता हूँ मैं भाई। ये लाइंस बाहर जा कौन सा रहे, वाला एरर बोल रहे? ये वाले। our top and trusted content providers। तू ना एक काम कर, डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम कर सकता है क्या? डिस्कॉर्ड पर से। हाँ रुको रुको, स्क्रीन शेयर। डिस्कॉर्ड पर मैं सिर्फ मेरे लिए यार, वो दिख नहीं हाँ रहा, वो स्लो होता है ना हाँ यूट्यूब हाँ, का। चलता चलता। हम्म, ये वाला, हाँ, अब बता। ये वाला। अच्छा, वो जा रहा है वो। बाहर जा ओके। रहे। हाँ, ओके। उसके बाद किसका मतलब क्या कर रहे हो तुम्हें अभी, कौन से फीचर सोच रहे वही तो ना, अभी कुछ प्लान नहीं किया है वैसे, कुछ क्रेजी करना है यार, लोगों को हो? लाना है इसमें। सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे क्या? सिर्फ न्यूज़लेटर या मतलब और? अ, तूने सब्सक्राइब किया है ना, वो आता है ना तेरे को डेली? हाँ हाँ, वो आते। ठीक है, उसमें कुछ बैकएंड में तो नहीं लग रहा मुझे, यही फ्रंट बैकएंड में एंड का कुछ ही नहीं। बहुत कुछ है। अभी आर्टिकल फिर जनरेट करने का ऑप्शन, आर्टिकल? जनरेट सॉरी, करने का, आर्टिकल जनरेट, लाइक रुको मतलब नहीं इधर, समझा। रुको रुको, विजिबल, आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट। ये नाइस। जनरेट आर्टिकल, लाइक impact of AI, जनरेट। ये खुद से आर्टिकल जनरेट करेगा क्या? हम्म, इधर आउटपुट। और ये मतलब क्या, कहाँ से लेता है ये सोर्स? जेमिनी। ओके, जेमिनी फ्री वाले टोकन्स ना? हाँ, अभी तक तो जेमिनी का फ्री वाला यूज कर रहा, अभी वो पाइथन में बनाने का है अभी। ओके ओके, मतलब मेरे पास एक आइडिया, ये भी इंटीग्रेट डायरेक्ट इधर कर सकते हैं अपन इसमें, हाँ, डायरेक्ट राइट? डायरेक्ट इधर इंटरग्रेट कर इधर को एक नया उसे सेक्शन पब्लिश। बनाने का, जनरेट। हाँ, आर्टिकल का सेक्शन बनाने का, न्यू ओके, आर्टिकल हाँ, जनरेट। पब्लिश आर्टिकल का भी एक ऑप्शन देंगे, हाँ और फिर जनरेट आर्टिकल का भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, और आर्टिकल पब्लिश के थोड़े क्या तो राइट पैसे राइट, भी। नाइस आइडिया। और नेक्स्ट ब्लॉग टाइटल, हाँ, वेर आई है, आर्टिकल टाइटल नहीं, आर्टिकल टाइटल तो जनरेट नहीं कर सकते।
ब्लॉग ठीक है, वो ब्लॉग भी डाल टाइटल। देंगे यार हम, मतलब कुछ ही हम्म नहीं। क्या क्या यूज किया है तूने इसे टेक स्टैक इसमें? रिएक्ट, सिंपल, पोस्टग्रेस और ओके। लेट मी ओपन सिंपल जावास्क्रिप्ट रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट, खत्म। बैकएंड में एक्सप्रेस। हम्म। और एक्सप्रेस टाइप। ये भी अपडेट करना है, मतलब लॉगिन वाला क्लर्क यूज कर लॉगिन। रहा हूँ। हाँ, क्लर्क यूज कर। मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, विजिबल के AI डॉट वर्सन डॉट ऐप। एक मिनट, मैं ट्राई करता। विजिबल, विजिबल बाय मुझे कितने बार फिरती है आगे पीछे आगे पीछे। लॉगिन करना पड़ता है क्या? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्लर्क का उसका अपग्रेड करने का है खुद से, मतलब थोड़ा। तब तक क्लर्क। इसका डेटा किधर जाता है? मेरा सेव किया हुआ, अगर अपना वो गूगल का डेटा या फिर ईमेल। मेरे डॉकर पर ये लॉगिन वाला तो क्लर्क कर जाता है। ये अच्छा, आर्टिकल ओके। जनरेशन लॉगिन वाला। वाला क्लर्क पे जाता है। हाँ, ये आर्टिकल जनरेशन वाला मेरे डेटाबेस पर आता ये ओके। तुम्हारे पास पूरे देखे जाए तो ये 6 टूल्स है। एक एआई आर्टिकल वाला, फिर है। ब्लॉग टाइटल, फिर एआई इमेज इमेज। जनरेशन, बैकग्राउंड रिमूवल, ऑब्जेक्ट रिमूवल एंड रिज्यूमे रीराइटर। और नेक्स्ट कम्युनिटी, उधर पोस्ट शेयर कर सकते हैं, मतलब जनरेटेड इमेजेस को शेयर कर यहाँ पे सकते हैं। क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई? किधर? नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, पावरफुल एआई टूल्स, उसके नीचे जो 6 टूल्स है, उधर डायरेक्ट क्लिक करके वहां पे नहीं जा सकते क्या? नहीं 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 नहीं, उधर ऑप्शन नहीं। डायरेक्ट स्टार्ट जनरेटिंग पर। क्या है स्टार्ट नाउ? ओके। फिर वो क्यों, वो एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं बाकी के? मतलब हाँ, इधर है तो ऑप्शन इसमें, नेवर में। अगर मुझे, अच्छा नैप बार में है। हाँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल तो जाके मेरा स्ट्रीम इज मूविंग फ्रॉम सब्जेक्ट टाइटल। So, हुआ जनरेट, इमेज जनरेट करो, इमेज। वो बैकग्राउंड का ट्राई कर रहा, पहले मैं देखता हूँ। हाँ, to generate you need to have a premium अच्छा जी, ओके। ऐसे छपाई। नहीं नहीं, फ्री, इट्स फ्री। बैकग्राउंड रिमूवल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता क्या?
हाँ, इधर बाहर मेन पेज पर था, जिधर कॉफी इन वन हैंड ग्रीन सेंस इन अदर लिखा हुआ है। क्या क्या? मेन पेज मतलब वर्सल डॉट ऐप। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उधर आया मैं। स्क्रॉल करो नीचे, ओके, सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन है। टाइटल जनरेशन और आर्टिकल जनरेशन $0। नहीं नहीं, इधर चूज योर प्लान है तो। टाइटल आर्टिकल। हाँ हाँ, उसे क्लिक करो, सब्सक्राइब। ये पेमेंट का कैसा किया है तूने, मतलब नहीं नहीं, पेमेंट कैसे फ्री किया? वाला वो क्या तो ऑप्शन आता था उधर, यूज। फ्री वाला से वो पेमेंट नहीं होता उधर से। तेरा आवाज नहीं आ रहा ना सिर्फ ठीक से। उधर से पेमेंट नहीं होता, सिंपल क्लिक टू सब्सक्राइब। ओके ओके ओके। वो टेस्ट का कुछ तो था। राइट, हो गया। हाँ, ओके राइट। नाउ यू कैन जनरेट। लेट मी जनरेट अ इमेज, लॉक इन व्हाइट लाइन। ये बैकग्राउंड रिमूवल में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता क्या? डायरेक्ट वो राइट क्लिक करके सेव इमेज हाँ करना पड़ता? हाँ, राइट क्लिक करके सेव इमेज। Yes, okay. और क्या था? या इमेज जनरेशन ट्रैक पर को। हम्म, हम्म। इफ यू क्लिक टू मेक दिस इमेज पब्लिक, वो कम्युनिटी में आता। कम्युनिटी में ऐड होगा। हाँ, जिधर हम लाइक कर सकते हैं ऐसा सब। आर्टिकल जनरेशन फिर। रियलिस्टिक स्टाइल में। ये जेमिनी जनरेट करता है क्या? हाँ हाँ ना सर। हाँ। हेलो, हेलो। देयर इज अ लैग। तेरा आवाज नहीं आ रहा ना। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ, अब आ गया अब आ गया। लैग हो रहा बहुत, इधर का स्ट्रीम, इधर का स्क्रीन शेयर रुकाना पड़ता। हेलो हेलो हेलो। चैट्स लीक हो रहे हैं, चैट्स लीक हो रहे हैं। तब तक के लिए लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर, वेयर आई वाज। ओके, हेडफोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टर। Let me solve this question, these questions faster.
So here we have a array and 71, 72. Simply let me close this one and also this one too. Next, let me add a for loop for int I equal to 0, I less than dot temperature dot size. I don't want to type this one. Let me paste it dot size and then I plus plus. I think so. No one is here. So let me write. If we are standing here, we had to look for next, like next from next day. So let me take int j equal to I plus 1 and start a while loop. J is less than temperatures dot size. We will traverse until that and also yes until then until that. Let me take a array to store answer with a temp dot size. अभी ये सही है या नहीं पता नहीं. I'm confused. Find out the day where which is more warmer when we have a more warmer temperature. If num temperatures of J is greater than temperature of I, we will do one thing. We will do one thing. What we will do is that we will do one thing. What we will do? We don't do anything. We just return the answer. And not return answers. We will start counting from here. Int count equal to 1. Let me add it as 0. Then when we are traversing here, we will just increment the count, and when we get it, we will push that into answer dot push back count. Answer dot push back count. I think so. I'm right. And then return the answer over here. Let me add the ये तो है सर्दी में songs are getting ऊपर played. की किरणें Let me stop. उतर Yes. Next time here and returning the answer. Memory limit exceeded. So when we get the answer, we are returning here. And next, what we have to do is that I don't think so. We want to do anything.
Just increment the J. We are not incrementing the J. Let me wait. Let me think a bit. Let me think a bit. Let me think a bit. If J equal to I plus one, then we are checking it with this. If it is greater, then we'll, let me check the answer. Answer is a very big answer. Why we are? I'm getting this answer, which is correct, but not this. Why this? Break. For one element, we are moving forward. I get that. I will break this while loop, but that is not happening. But it's not happening. If Hmm, when I'm standing over here, I have to look here. If I get that greater than I, which I am not getting, but I got that. So I need to store 1, but it is storing 0. Why it is storing 0? I can't do these things. डेली टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है भाई, जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है.
739 क्वेश्चन जो कि चैट जीपीटी पर से मिला है. ट्राई टू सॉल्व एंड थोड़ा लॉजिक बताओ भाई. कितना 30 मिनट्स हो गए. Very nice background. Very nice background which I am getting. में बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है नहीं. I is less than n minus I because z equal to 1 plus 1. हाँ z हाँ. Yes. But still we are getting like 000. Why? Yuvraj Saini. I have solved like 120 questions until now, and this is a today I'm trying after 1 month. After 1 month, I'm solving this question, which I have solved already one question, but this is the second. अभी तक कितने क्वेश्चंस किए हैं टोटल. टोटल 120 130 प्लस 140 अगर गीक फॉर गीक्स कोड मतलब कोड फोर्सेस या नहीं कोड फोर्सेस पर दो तीन ही हुए हैं. नेक्स्ट कोड शेफ पर तीन चार कंटेस्ट. काउंट का पर्पस क्या है इसमें. काउंट का पर्पस आई एम काउंटिंग द डेज. If I'm standing over here, yeah, let me take 45. If I'm standing at second day, I'm counting the days until I get a better temperature. Nice man. भाई मैंने recently binary search का advanced question किए. How to be consistent arrays. कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहा due to college. College, you don't need a lot of time. You just need 1 hour to solve two questions while you are starting. For medium questions and hard questions, we need 1 hour, 130. If you are starting right now, if you are in a array, binary search, what until graph and DP, until and unless you are solving the problems using graph and DP, you don't need a 45 minutes से ज़्यादा. 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं एक क्वेश्चन को. So you can do 2 to 3 questions in 1 hour. Just be, just sit like me. I am sitting from 1 hour and 30 minutes. Safe lead code per. Safe lead code per. Let me show you. Lead code profile. Let me show you. Open हो जा भाई. सिर्फ लीड कोड पर मैंने अभी तक अपनी बैकग्राउंड 156. Yuvraj Saini 156 questions I have solved, and this is the 1 2 questions which I solved yesterday. उसके बाद तो बहुत गैप है.
बहुत बड़ा गैप है। इधर तो मैंने कंटेक्स्ट वगैरह ज्वाइन करे हुए हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन करते हैं ना, ये बाद में देखते हैं। यस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। So right now I'm I have took a answer array to return the output which I'm returning over here. So first I'm traversing through the temperature array. जब मैं traverse कर रहा हूँ, when I'm standing over here, तो मुझे चाहिए नेक्स्ट डे जो वार्मर है मेरे से ज्यादा, समथिंग लाइक अगर मैं इधर 32 मिल रहा है मुझे, तो इधर मुझे उससे ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर चाहिए। तो इफ आई गेट ओवर हियर तो 1 डे, if I get over here to 2 days. So like that I need to traverse. So when I am at 73, तो मुझे फाइंड आउट करना है 74 को। तो मैं जे को इधर रुका रहा हूँ एंड उसके बाद काउंट को कर रहा हूँ 0। और इस कंडीशन में जाने के बाद पहले मैं काउंट को बढ़ा रहा हूँ, लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर तो काउंट होगा 1। और उसके बाद इफ कंडीशन के अंदर मैं कर रहा हूँ, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ next greater war 1 temperature. If I get that, I will push it into the array. Okay. Wait. When I'm declaring this array, it is taking by default 0 elements. If you get that, अभी वो 0 वाला तो कट हो जाएगा। Let me remove this. अभी वो 0 वाला तो कट हो जाएगा, आई थिंक सो। हाँ, 0 वाला कट हो चुका है। And but still we have to find out for the last 2 days. अगर आप इधर रुक रहे हो तो इधर का, if you didn't get here तो क्या करना है? क्या करना है, किधर डालें वो कंडीशन? We have solved until here. We have to solve from for this and this. उसके लिए कौन सी कंडीशन चेंज कर सकते हैं हम? We are traversing until here, and if I get this, और मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। If j is greater than equal to temperature dot size, तो तब क्या ऐड करेंगे हम? आंसर डॉट पुश बैक 0। बट 0 तो हमने इधर डिक्लेयर करा हुआ है। लेट मी सी। यस, वी हैव सॉल्व अनदर वन कंडीशन, बट फॉर द लास्ट डे के लिए तो 0 ही होगा, आई थिंक सो। So let me add it last because we don't have days after that. So answer dot push back 0. Yes, we have solved this question. Let me see the time complexity which we are taking. First, we are traversing through the element, so it means big of n, big of size, and next for every element we are again traversing until here. But the catch is that if we get the element over here, we will break it out.
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम ही है बिग ऑफ n स्क्वायर से. सो टू ट्रैवर्स big O of n to traverse array big of n. Next, to find out warmer day, उसके लिए हम worst केस क्या हो सकता है. 74 इधर है और उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इधर है. तो big of n, big O of n. तो I think so big of n square one time. Okay, let me explain the question and answer. We have a question which is saying like they have given a temperature array and next answer we have to give the output like if we are standing here, if we are at a day 0, we have to find next greater element, something like that, next day which has a warm than today. अगर आज अगर आज 20 डिग्री का 20 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट डे हमें ऐसा फाइंड आउट करना है कि 20 से ज्यादा हो. तो फॉर दैट इज द क्वेश्चन. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रैवर्सिंग थ्रू द होल एरे टू ट्रैवर्स. ओके, नेक्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द code. First we are traversing through the array to calculate. सभी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट मतलब एवरी एलिमेंट मतलब टेम्परेचर के अंदर के टेम्परेचर के अंदर जो एरे है उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करना है. सो दैट इज व्हाई वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम 0 टू टेम्परेचर डॉट साइज माइनस 1. वो तो पता ही होगा. नेक्स्ट वी आर टेकिंग द जे टू ट्रैवर्स व्हाइल लूप. ओके, तो अभी हमें इफ यू आर स्टैंडिंग हियर आई इज 0, तो हमें फाइंड आउट किधर से करना है, 1 2 3 4 इधर से, तो 0 नहीं लेंगे, i+1 लेंगे. तो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द काउंट कि कब मिला, कितने दिन बाद मिला. तो उसके लिए हम ले रहे हैं काउंट का वेरिएबल विच इज 0 बाय डिफॉल्ट. तो रिवर्स द स्पेस फॉर आंसर टू अवॉइड रियल इक्वेशन. रिवर्स द स्पेस फॉर आंसर. समझ नहीं आया भाई. स्वप्नराज मोचते. Reverse the reverse the space for answer to avoid reallocation. मतलब बाय डिफॉल्ट 0 रखो ऐसा बोल रहे हो आप. लेट मी ट्राई. लेट मी ट्राई टेम्परेचर. लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट. आई आंसर को पहले से साइज दे दो. ओके, आई आंसर को पहले से ही साइज दे दो. ओके, टेम्परेचर डॉट साइज जो कि होगा 0 से. नेक्स्ट, जब हम पुश कर रहे हैं, पुश करते वक्त क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई करेंगे, राइट. आंसर ऑफ आई इक्वल टू काउंट कर देंगे. आंसर इज गारंटी टू हैव टेम्परेचर डॉट साइज. ओके, एलिमेंट्स टू आंसर सर डॉट रिवर्स टेम्परेचर डॉट साइज. क्या आप ये कहना चाहते थे कि डिक्लेयर करो साइज रिवर्स.
समझ नहीं आया. It was fine. Just reverse the space. Push back. सही था. Okay. Let me try it out. Let me try what you are telling. सिर्फ किसे रिवर्स करना है? रिवर्स टेम्परेचर डॉट साइज. बोलो भाई. रिवर्स नहीं, रिवर्स. रिजर्व. सॉरी 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 सॉरी. ओके. काउंट इक्वल टू. जस्ट आफ्टर आंसर डिक्लेरेशन. ओके वेट. इंसर्ट डॉट. ऑथ जीरो. ओके. Swapnraj, am I correct now? I have done the answer dot reserve temperature dot size. बाकी कोड जैसा था वैसा सेम. चेक इट अगेन. क्या मैंने सही करा है? Because I didn't use reserve until now. Have you used auth zero? एक डाउट था. Auth zero. Next auth यूज किया है. Auth zero. Let me see what is auth zero. Okay. Let me run it again. Sorry guys. Yes, that is the word. Okay. Let me submit it. Is the टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेक्ट? और हमें कोई डिफरेंट अप्रोच भी देखनी चाहिए? हाँ यस. वो तो मैंने यूज किया है रिएक्ट में. और जीरो. बहुत कुछ यूज कर रखा है बट आई डोंट रिमेम्बर आउट जीरो. नेक्स्ट ऑल्सो यूज किया. टाइम लिमिट एक्सीडेड. हेलो एवरीवन. टाइम लिमिट एक्सीडेड. Whenever you know the size of the vector to be at the end, always use reserve. Okay. Yes sir. अभी टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया है. क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूव करना का पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बिकॉज बाप रे. स्पेसिफाई टेम्परेचर. टेम्परेचर तो इतना है. करेक्ट है 3200. बट द एरर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सॉल्व एग्रेसिव कॉज. एग्रेसिव कॉज मैंने सॉल्व कर रखा है 2023 में. आई थिंक सो. व्हाट इज द डेट? 2023 या 2024. एग्रेसिव कॉज सॉल्व हो चुका है भाई. क्रिश.
These are the questions which I have to randomly from ChatGPT and solving. एग्रेसिव कॉज तो था लिस्ट में एंड सॉल्व भी कर रखा है बाइनरी सर्च क्वेश्चन आई थिंक सो जितना मुझे याद है. इसका कोई बेटर अप्रोच बताएगा या मैं सॉल्यूशंस में जाऊं बिकॉज मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है आफ्टर अ मंथ. वैसे कौन से ईयर में हो आप लोग क्रिश एंड स्वप्नराज थिंकिंग ओके. आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड आई कांट सॉल्व डेली टेम्परेचर वाला क्वेश्चन. बाप रे. Second year, new pie. It is good time to start TSA for you. Third year, big people here. Second year, third year, you guys have a time to do things, which I don't, which I didn't. हाँ, aggressive cause तो हो गया था, तो फिर से solve करना है. But first let me solve this and look at the solutions. उसके बाद rotting oranges, something like this question we have. उसके बाद करेंगे कॉज वाला एग्रेसिव कॉज वाला. क्वेश्चन तो समझ में आ गया है. कैन वी यूज द इफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड वी हैव टू स्टैक तो यूज नहीं कर सकते. उसके बाद कैन वी स्टार्ट फ्रॉम बैक टू बैक बिकॉज इधर तो जीरो रहेगा. उसके बाद इसको चेक करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसको चेक करने में थोड़ा कम लगेगा. हाँ हाँ. आई गॉट अ लॉजिक लाइक लेट मी explain you guys. Suppose we are traversing from here and we have a but still hmm, let me dry run then and think. कोई तो कोई solution निकलेगा ही. तो पहले है आंसर जीरो when we are standing over here और एलिमेंट है 73. अभी उसके बाद जब हम इधर जा रहे हैं कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है तो स्टिल जीरो. जीरो कॉमा जीरो. जब हम इधर जाएंगे then we we have a 76 जो उससे बड़ा है एंड उसका इंडेक्स क्या है. उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7. तो 76 का इंडेक्स क्या है 6 एंड 72 का इंडेक्स क्या है 5. तो आंसर होगा 1 1. तो व्हेन वी आर स्टैंडिंग एट 69 तो अभी लार्जेस्ट एलिमेंट अगर हम स्टोर करेंगे तो 76 होगा एंड व्हेन वी लुक फॉर द नेक्स्ट डे वो तो 76 है 72 है.
क्या कर सकते हैं? आंसर तो आएगा 1। And when we are standing at here 71, we need 72. So 1 plus 1 2. And again when we are standing at 1, इधर जाना 75. I don't think कि मैं ये कर पाऊंगा. Let me see the solutions. Can we go for the solutions? या फिर चैट जीपीटी को पूछे? Let me go with the solutions. Stack solution. Python, JavaScript, this easy stack. Stack, monotonic stack. Initialize to track so each temperature in the array. While the stack is not empty, the current temperature is greater than the temperature at they are using a stack and getting the peak element. They are using a stack, simple stack. But still they are taking the time complexity which we have, I think so. But the approach is different. स्टैक में भी वीक पढ़ रहा हूँ मैं. स्टैक में भी वीक पढ़ रहे हैं, डीपी में भी वीक पढ़ रहे हैं, और ये सिंपल कोड भी नहीं समझ आ रहा है. बट स्टिल they are traversing through the simple temperature array. Then here is a condition to not get out of the bounds. Next, if they get a stacked on top, stacked on top of temperature, they are storing that into the result -1. Let me take this and put on chat GPT, but we have here.
While the stack is not empty and the current temperature is greater than the temperature at the index on the top of the stack, upgrade the result for the index at the top of the stack with the difference between the current index and the index on the top of that stack. If someone is here, try to solve this question. I think it is easy if you have done stack. It is using stack and linear search. Explain. Given a list of the daily temperatures, question तो मालूम है monotonic stack. We use a stack to keep track of indices of temperatures in decreasing order. When we find a new temperature that's warmer than the one at the top of the stack, it means we have found the next warmer day for that earlier day. Declared उसके बाद iterate उसके बाद while stack not empty and current day's temperature is warmer than the temperature at the top of the stack. That means the current day I is the next warmer day for the day at index. भैया नहीं समझ आ रहा है. I need a revision. I need revision. I need revision. I'll try to solve. I'll try this again after the stream. But let me take this question. Take the next question. Routing oranges. Yummy, yummy. Hello guys, my sister is going to Garba guys. And hear me sitting and solving DSA questions. Life is pretty hectic for the engineers. You are given a name into n grid where each cell can have one of three values: 0, 1, or 2. 0 represents empty cell, okay, fresh, and then rotten orange. Every minute, any fresh orange that is poured diagonally adjacent to a rotten orange becomes rotten. Return by a minimum number of minutes that must percentage in a cell has a fresh orange. If this is impossible, return -1. तो हमें करना है खत्म ऑरेंजेस को. जो फ्रेश ऑरेंज हैं उनको करना है खत्म. और हम खत्म कैसे कर सकते हैं? Any fresh orange that is four diagonally adjacent to any row. तो जब हम when we are standing over here and it is a fresh one, so when we stand at here it becomes kharab like that. So when we are standing here, first minute it gets rotten, something like खराब बोल सकते हैं हम. तो नेक्स्ट मिनट में उसके बाजू वाले जो पड़ोसी हैं वो खराब हो जाएंगे. एंड उसके बाद इसका पड़ोसी खराब हो जाएगा नेक्स्ट मिनट पर और इसका खराब हो जाएगा. उसके नेक्स्ट मिनट पर इसका खराब हो जाएगा. इसका खराब हो जाएगा. उसके नेक्स्ट मिनट पर इसका खराब हो जाएगा. तो हमें करना क्या है? Something like a greedy question over here.
तो लेट मी एटलीस्ट सॉलिड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम थोड़ा लूज पढ़ रहे हैं. लेट मी सॉलिड इफ वी हैव टू ओवर हियर. फर्स्ट में टू दिया गया है हमको, मतलब वो खराब है. तो जीरो, जीरो मतलब एम्प्टी है. लेट मी फर्स्ट टेक टू फॉर लूप टू ट्रैवर्स 2D मैट्रिक्स. उसके बाद हम सोचेंगे कि करना क्या है. int I इक्वल टू जीरो, I लेस देन ग्रीड, ग्रीड ऑफ जीरो करें या ग्रीड डॉट साइज I प्लस प्लस. उसके बाद नेक्स्ट int j इक्वल टू जीरो, j लेस देन nums, नो ग्रीड, ग्रीड ऑफ जीरो डॉट साइज j प्लस प्लस. If we have a at first minute, what is happening, but how many minutes we have, that is what we have to calculate. And when we have array like this, the orange in the bottom after left corner, row 2, column 0, is never rotated because rotation only happens four directionally. What it means is इसमें क्या हो रहा है, let me find out. Control C, Control V, Control C. I think so. बाजू में कोई है ही नहीं उसके. That's why it is not getting rotten. But hey, the orange in the bottom left corner, row 2, column 0, is never rotten. इसका कट हो जाएगा, इसका कट हो जाएगा, इसका इससे लग जाएगा. इट इज लाइक अ कोरोना जो फैल जाएगा. इसका इससे लग जाएगा, इसका इससे लगेगा. बट द ओनली पर्सन which remains constant, fresh, जो जिसके आजू बाजू कोई नहीं है जो उसे गंदा कर सकता है. तो देन वी हैव टू रिटर्न द रिटर्न -1. तो हमें पहले करना क्या है, पहले हमें करना है इसका इसे जीरो, इसका इसे टू करना है, इसका टू करना है, इसका टू करना है, इसका टू करना है, इसका टू करना है, ट्रैवर्स करके. फिर उसके बाद again we will traverse and find out whether we have a one in our two-dimensional array. If we find one, we will return -1. If we don't find one, we will return the answer which we got while we were making the oranges rotten. तो हमें करना क्या है, अभी कर कैसे कर सकते. if we are standing here 0 1 0 1 0 1 0 1. करना क्या है, ट्रैवर्स करके चेक तो कर सकते हैं, बट अभी इसे फर्स्ट मिनट पर ये हो जाएगा, सेकंड मिनट पर ये दोनों हो जाएंगे, थर्ड मिनट पर ये हो जाएगा, फोर्थ मिनट पर ये हो जाएगा. बट ये रिमेन रहेगा तो इसका आंसर -1 आ जाएगा.
Next, when we are looking over here, फर्स्ट मिनट पर ये है कंडीशन, नो 0 मिनट पर, फर्स्ट मिनट पर ये कंडीशन है, फिर सेकंड मिनट पर ये कंडीशन है, थर्ड मिनट पर ये कंडीशन है, फोर्थ मिनट पर ये कंडीशन है। लाइक कैसे करें? हाउ कैन वी डू इट? हाउ कैन वी डू दिस? एटलीस्ट सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? इफ यू गॉट टू, तो उसके आजू बाजू वालों को डायरेक्टली ये कर देंगे। इफ ग्रीड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 2, देन आई प्लस 1 और उसके नीचे वाला if I don't know what I'm doing, but grid of I plus 1 equal to 2. Nine, 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 nine. If you find 2, then we have to make 2 of their adjacent, साइड वालों को 2 कर देना है। तो we got 2, तो अभी क्या करें? Let's check I जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा। num grid dot size -1, तो हम क्या करेंगे? grid of I plus 1 j equal to 2, और if j is less than grid of 0 dot size -1, तो भी हम grid of I j plus 1 इसको कर देंगे 2, इनको भी लगा देंगे, खराब कर देंगे। तो अगर ये सब हो चुका है, तो हम ये कब करेंगे? while while लूप तो लगा नहीं सकते। लेट मी ट्राई फर्स्ट दिस, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। बट फोर तो रिटर्न करना है ना। इफ ग्रेड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1, देन रिटर्न -1, रिटर्न आंसर
अभी आंसर कैसे फाइंड आउट करें? फर्स्ट मिनट पर होगा तो एक ही बार, ये जो है वो होगा तो एक ही बार। जितनी बार ये रन होगा, नहीं। क्या थर्ड फॉर लूप लिया जाए या व्हाइल लूप? I can't think anything with a two-dimensional int answer equal to 0। अगर हमने ये ऐसा कुछ किया है तो हम करेंगे आंसर को अपग्रेड और आंसर को करते हैं सबमिट और उसके बाद देखते हैं। int आंसर को करते हैं बाहर, उसके बाद चेक करते हैं। What we are getting is that 9, क्योंकि वो 9 बार रन हो रहा है। इट इज नॉर्मल, तो हमें इधर नहीं करना है, इसको करना है इधर। But when we do here, we will get 3, still 9. It means if we are making cross to every orange, still we are traversing whole. What we can do is that how to calculate भाई, इटरेशन कैसे कैलकुलेट करें इधर वाले। Let me check it from GPT solving. Let me copy this question. Not this. And I am doing like control C this. Done. Nice. You are trying to solve and your current code is good start. But right now it doesn't quite capture how oranges wrote over time, minute by minute. So which I know ChatGPT will understand me. What's wrong? With your current approach, you are looping once over the grid and making any orange adjacent to a rotten one become rotten instantly. But in the problem, oranges wrote one layer per minute, not all at a once. So you need to simulate this process minute by minute. That's why your current approach returns wrong result. So what I have to do is that start from all rotten oranges, which is 2. Put their coordinates in a queue. Track fresh oranges, 1 count. Each minute, process all rotten oranges in the queue. Each minute, process all rotten oranges in the queue and route their 4 directional neighbors. Okay, sir. When new oranges rote, add them to the queue for the next minute. Continue until no fresh oranges remain. So they are using a queue of very big answers here. Initialize the queue on the rotten oranges. Fresh plus plus, and we are counting the fresh plus plus.
Then fresh is equal to 0, then we will return 0. Int minute start is the minute for directional movement. A very big answer, which इतना बड़ा तो होना ही है क्योंकि we are solving a question which has two-dimensional. तो 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 So let me end the stream over here क्योंकि 2 घंटे की स्ट्रीम हो चुकी है and we are talking consistently and currently it's 4:45 and I solved two questions, one with a correct way and one with a time TLE and third with a worst answer. So can we stop over here? Let's stop for today and come back tomorrow with a better speaking skill. I'm going to play a nice, good song. स्टॉक मार्केट करायचं तर आहे पण So that's it for the stream. See you where I am. I'm not here. I'm here. Let me. So that's it for this. So that's it for the. So that's it for today. Let's stream again. कल परसों जब होगा तब. तो bye. ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਭਾ ਉੱਚੀ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ ਭਲੇਖੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਯਾਰੀ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ
ਐ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾੜਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਜੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁੱਤੀ ਬੋਲਦੀ ਐ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾੜਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਜਾਨੀ ਜੋ ਲੱਗਾ ਡੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫੇਸੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੋ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਫਲੋ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ ਆ ਬਲੋਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ